प्यारे बच्चों, आपका +2 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 14th यूनिट है बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें जो आज हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, देयर फॉर्मेशन, राइटिंग एंड नेमिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, प्रॉपर्टीज एटसेट्रा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। Now, the topic is oligopeptides and polypeptides. Peptides having relatively shorter chains, that is having 2 to 10 alpha amino acid residues, are called oligopeptides, while those with longer chains, that is greater than 10 alpha amino acid residues, are called polypeptides. Next topic is proteins. A polypeptide with more than 100 or so alpha amino acid residues having molecular mass greater than 10,000 unit is called a protein. However, the distinction between a polypeptide and a protein is not very sharp. A polypeptide with fewer alpha amino acid residues may also be called a protein if it has a well-defined conformation characteristic of a protein, such as insulin, which contains 51 alpha amino acid residues. तो यहाँ पर इंसुलिन के केस में, क्योंकि जिसकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो लेस देन 100 अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यूज कंटेन करती है, यानी कि इंसुलिन प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन में सिर्फ 51 अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं, फिर भी ये प्रोटीन की तरह बिहेव करती है, क्योंकि द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन हैज़ ए वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोटीन, दैट इज वाई इंसुलिन इज ए प्रोटीन. If we represent the different alpha amino acid residues present in a protein by the symbols, that is AA1, AA2, AA3, AA4 and so on up to AAN, that is up to C-terminal alpha amino acid residue, and a peptide bound by a dash, then a protein molecule may be represented as AA1 dash, AA2 dash, AA3 dash, AA4 dash up to AAN, that is up to C-terminal alpha amino acid residue. The next topic is formation of a polypeptide. If a large number, that is 100 to 1000 of alpha amino acids are joined together by peptide bonds, the polyamide thus formed is called a polypeptide. As we know, all the naturally occurring alpha amino acids belong to L series. That is, the amino group of each alpha amino acid is oriented towards the left hand side, while the carboxylic acid group of each alpha amino acid is oriented towards the right hand side. So, during the formation of a polypeptide chain, the carboxylic acid group of each alpha amino acid combines with the amino group of the next alpha amino acid, and thus due to condensation or loss of water molecule, there is formation of a peptide bond between these two alpha amino acids, that is CONH peptide bond, which is in transposition. So in this way, the alpha amino acid units goes on adding to form a polypeptide chain or a polyamide chain. नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइटिंग एंड नेमिंग ऑफ ए ट्राईपेप्टाइड. तो ट्राईपेप्टाइड जो है दैट इज द पॉलीमर ऑफ 3 अल्फा अमीनो एसिड्स, सो विच आर अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस. तो इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसमें 3 अल्फा अमीनो एसिड जो हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक स्ट्रेट चेन में अरेंज है. तो अब इस ट्राईपेप्टाइड में, जैसे कि आपको जानते हैं कि ऑल द नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स बिलोंग टू एल सीरीज, तो ये जो आपके 3 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं ये इस तरह से आपने सीक्वेंस में लिखने हैं कि इनके जो अमीनो ग्रुप हैं वो लेफ्ट हैंड साइड को ओरिएंटेड होने चाहिए, और जो हर एक अल्फा अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो राइट हैंड साइड को ओरिएंटेड होना चाहिए. मान लो आपका फर्स्ट जो अल्फा अमीनो एसिड है वो है एलेनिन, तो इसका अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड को है, कार्बोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड को है. सिमिलरली दूसरा है आपका ग्लाइसिन अल्फा अमीनो एसिड यूनिट, इसका भी अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप राइट हैंड साइड को. तीसरा अल्फा अमीनो एसिड है आपका फिनाइल एलेनिन, इसका भी अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड को और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप राइट हैंड साइड को. अब इसमें क्या होगा
कि जो आपका फर्स्ट अल्फा अमीनो एसिड है एलानिन, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंबाइंस विद द अमीनो ग्रुप ऑफ सेकंड अल्फा अमीनो एसिड ग्लाइसिन, और इस तरह से इन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से जो ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है that combines with the amino group of third alpha amino acid that is phenylalanine, और यहाँ पर भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अब इस सीक्वेंस में आप देखते हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड को है, यानी कि जो फर्स्ट अल्फा अमीनो एसिड है उसका अमीनो ग्रुप जो है वो फ्री है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यू। और जो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड को है, यानी कि जो आपका लास्ट अल्फा अमीनो एसिड है जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री है, इसे बोलेंगे हम सी टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यू। इन दिस वे वी गेट द स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्राइपेप्टाइड। नाउ फॉर नेमिंग ऑफ ए ट्राइपेप्टाइड same rules are followed as in case of naming of oligopeptides or polypeptides or proteins. The naming must be done in the same sequence in which the alpha amino acids are arranged in a polypeptide chain. Start the naming of the polypeptide chain from the extreme left hand side, that is from N-terminal alpha amino acid residue. While writing the name, the suffix in the name of each alpha amino acid is replaced by "-il" for all the constituent alpha amino acids except the C-terminal residue of alpha amino acid. So in this way we get the name of the tripeptide as alanyl glycyl phenylalanine, and in terms of three-letter abbreviations the name of the above tripeptide is ALA-GLY-PHE, and in terms of one-letter codes the name of the above tripeptide is capital A-capital G-capital F, whereas the dash between any two abbreviations in three-letter symbols or one-letter codes represents the peptide bond or peptide linkage between any two alpha amino acid units in the polypeptide chain. The next topic is properties of polypeptides. So polypeptides are amphoteric in nature because of the presence of terminal ammonium cation and carboxylate anions, as well as the ionized side chains of alpha amino acid residues. At isoelectric points, polypeptides have least solubility and hence can be separated. The next topic is properties of oligopeptides. Most of the toxins, that is poisonous substances in animal venom and in plant sources, are polypeptides. Some oligopeptides such as oxytocin, vasopressin and angiotensin II are effective hormones. The dipeptide aspartyl phenylalanine methyl ester acts as sweetening agent called aspartame. It is 100 times sweeter than sucrose and is used as a sugar substitute for diabetic patients. There are some oligopeptides which are used as sweetening agents. For example, here is an oligopeptide which is a dipeptide and it is named as aspartame. तो aspartame जो है ये एक डाइपेप्टाइड है, यानी कि ये दो अल्फा अमीनो एसिड यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक अल्फा अमीनो एसिड जो एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यू है, दैट इज द एस्पार्टिक एसिड, और जो आपका सी टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यू है दैट इज द मिथाइल एस्ट्रोफिनाइलएलेनिन। अब इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ एस्पार्टिक एसिड है वो कंबाइन कर जाता है अमीनो ग्रुप ऑफ मिथाइल एस्ट्रोफिनाइलएलेनिन के साथ, और थ्रू कंडेंसेशन और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स a peptide bond between aspartic acid and methyl astrophenylalanine, और इस तरह से एक डाइपेप्टाइड बनता है जिसको जो नेम है वो है एस्पार्टाइल
फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर, और इसका जो पॉपुलर नेम है वो है एस्पार्टेम. सो इट इज ए sweetening agent which is 100 times sweeter than sucrose, and it is used as a sugar substitute for diabetic patients. The next topic is classification of proteins on the basis of molecular structure. तो molecular structure के basis पर जो है प्रोटीन जो है that is classified as number 1 fibrous proteins. These proteins consists of linear thread-like molecules which tend to lie side by side to form fibers. The polypeptide chains in them are held together usually at many points by hydrogen bonds and some disulfide bonds. Due to strong intermolecular forces, fibrous proteins are insoluble in water. Examples of fibrous proteins are: fibrous proteins serve as the chief structural material of animal tissues. For example, keratin in skin, hair, nails, and wool, collagen in tendons, fibrin in silk, and myosin in muscles. The next class of protein on the basis of its molecular structure is globular proteins. The polypeptide chain in these proteins is folded itself in such a way so as to give the entire protein molecule an almost spheroidal shape. The folding of globular proteins takes place in such a manner that lipophilic, that is non-polar fat-soluble parts are pushed inwards, and hydrophilic, that is polar water-soluble parts are pushed outwards. Thus, due to folding of the globular proteins in this manner, as a result, water molecules interact strongly with the polar groups, and hence globular proteins are water-soluble. As compared to fibrous proteins, these globular proteins are very sensitive to small changes in temperature and pH value of the solution of globular proteins. The next is classification of proteins on the basis of chemical composition. So on the basis of chemical composition, the first class of protein is simple proteins. These proteins on hydrolysis give only alpha amino acids as its monomeric units. For example, albumin in the white of eggs, glutenin in wheat, oxygenin in rice, keratin in hair, nails, horns, etc. The next class of the protein on the basis of its chemical composition is conjugated proteins. These proteins on hydrolysis give a non-protein portion in addition to the alpha amino acids. This non-protein portion is called the prosthetic group. The main function of the prosthetic group is to control the biological functions of the protein. The next topic is structures of proteins. Proteins are biopolymers obtained by condensation of a large number of alpha amino acids joined together through peptide bonds having three-dimensional structures. The structures of proteins are quite complex. Their complex structures are usually discussed at four different levels, that is, primary, secondary, tertiary, and quaternary structures, each level being more complex than the previous one. Now let us discuss the primary structure of proteins. Proteins may have one or more polypeptide chains. Each polypeptide chain has a large number of alpha amino acids linked to one another in a specific sequence. The specific sequence in which the various alpha amino acids present in a protein are linked to one another is called its primary structure. Now let us discuss the structure of proteins. तो सबसे पहले हम करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनी पॉलीपेप्टाइड चेन विच कंटेन्स approximately 100 or more than 100 alpha amino acids and its molecular weight is more than 10,000 unit. तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है दैट इज कॉल्ड प्रोटीन. और एनी पॉलीपेप्टाइड चेन विच शोज द वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोटीन, तो वो भी पॉलीपेप्टाइड चेन भी प्रोटीन है. नाउ प्रोटीन is the polymer of alpha amino acids
and you know all the naturally occurring alpha amino acids belong to L series. तो इसलिए जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जब आप अल्फा अमीनो एसिड्स के यूनिट्स को अरेंज करेंगे, क्योंकि ये एल सीरीज से बिलोंग करते हैं, इसलिए ईच अल्फा अमीनो एसिड इस तरह से प्लेस करना है कि इसका अमीनो ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड को ओरिएंटेड होना चाहिए और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप राइट हैंड साइड को ओरिएंटेड होना चाहिए। इस तरह से जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड को अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यू है दैट इज कॉल्ड एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यू, और जो आपका एक्सट्रीम राइट हैंड साइड को अल्फा अमीनो एसिड यूनिट है उसे बोलेंगे सी टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यू, क्योंकि उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो फ्री होता है। अब इसमें अल्फा अमीनो एसिड जो है जब आप लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करेंगे अलोंग द पॉलीपेप्टाइड चेन, तो अल्फा अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो नेक्स्ट अल्फा अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से कंबाइन करके थ्रू कंडेंसेशन और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनाते हैं, और थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स और पेप्टाइड लिंकेजेस ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं यूनिट्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से एक पॉलीमर चेन बनाते हैं। नाउ एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स क्रिएट्स ए डिफरेंट प्रोटीन। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन refers to the covalent structure including the disulfide bridges of each polypeptide chain. The different chemical and biological properties of various proteins are primarily due to the differences in their primary structures, that is, the differences in their specific sequences of alpha amino acids. The first ever primary structure of protein, that is insulin, was determined by the British chemist Frederick Sanger. For this work, he got the Nobel Prize in 1958. The next is importance of the primary structure of a protein. The importance of the primary structure of a protein, that is the specific sequence of the alpha amino acids in the protein, in determining its biological activity is shown by the fact that replacement of just one alpha amino acid in the sequence of a protein destroys its biological activity. For example, the replacement of just one specific alpha amino acid, that is glutamic acid, by valine in hemoglobin, the protein of the blood, results in defective hemoglobin, which causes a disease called sickle cell anemia. In the patient suffering from this disease, the defective hemoglobin precipitates, causing the cells to sickle and sometimes even makes them burst, leading ultimately to death. For example, here is the sequence of alpha amino acids in a normal hemoglobin. If we replace the alpha amino acid glutamic acid by the alpha amino acid valine in this sequence, then we get the sickle cell hemoglobin, which causes sickle cell anemia disease. The next topic is configuration and conformation of the peptide bond in polypeptides. The lone pair of electrons on the nitrogen atom in the peptide bond is delocalized over the carbonyl group. As a result, carbon-nitrogen bond acquired some double bond character. In other words, the free rotation about the partial double bond between the carbon and nitrogen atoms is hindered, and as a result of this hindered rotation, the peptide bond can show geometrical isomerism. Now let us discuss the nature of peptide bond. तो जैसा कि आप जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड में जो कार्बन एटम होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और जो नाइट्रोजन एटम होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन और नाइट्रोजन एटम के बीच में सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में भी सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, और जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। नाउ ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट और भी कैन से ड्यू टू लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन कार्बन एटम, तो ऑक्सीजन क्या कर लेती है कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड है
उनको अपनी ओर विड्रॉ कर लेती है। इस वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन एटम है पेप्टाइड बॉन्ड का, दैट कंटेन्स फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो लोन पेयर कंटेनिंग फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल है नाइट्रोजन एटम का, वो क्या करता है कि वो एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है और इस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर लेता है। सो देयर इज डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम। अब जब डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर्ड हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, तो फ्री रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड और हाइंडर्ड। इस वजह से there are two stereoisomers of the peptide bond, one is trans and the other is cis। यानी कि जो ट्रांस आइसोमर है पेप्टाइड बॉन्ड का, दैट इज मोर स्टेबल बिकॉज देयर इज नो स्टेरिक हाइंड्रेंस, जबकि जो आपका सिस आइसोमर है पेप्टाइड बॉन्ड का, देयर इज स्टेरिक हाइंड्रेंस एंड ड्यू टू दिस स्टेरिक हाइंड्रेंस इट इज लेस स्टेबल। क्योंकि अब सिस आइसोमर में जो आपके बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे लाई टुवर्ड्स द वन साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, जबकि जो आपके ट्रांस जो आइसोमर है आपका पेप्टाइड बॉन्ड का, उसमें जो बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे लाई अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। नाउ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड जो है, दैट इज द actual structure of peptide bond which is the most stable and it is in transposition, क्योंकि ट्रांसपोजिशन में ये मोस्ट स्टेबल होता है एंड देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स। फर्दर, बिकॉज ऑफ मच लार्जर स्टीरिक रिपल्सन्स बिटवीन साइड चेन ग्रुप R dash of one alpha amino acid and the side chain group R double dash of the other alpha amino acid in cis isomer, the trans isomer is more stable. Thus, the atoms forming the peptide bond that is CONH group lie in a plane with the oxygen and hydrogen atoms in trans orientation. Thus, it is obvious that free rotation of a peptide chain can occur only around the bonds joining the nearly planar amide groups to the alpha carbons. It is therefore possible to describe the conformation of the protein molecule or the polypeptide chain in terms of the angle phi between side chain group R dash CHNH bonds and the angle psi between side chain group R dash CH CO bonds. These angles are called Ramchandran angles after the name of the Indian biophysicist G.N.A. Ramchandran. The next level of the structure of the protein is secondary structure of a protein. The conformation which the polypeptide chain assume as a result of hydrogen bonding is called the secondary structure of the protein. Depending upon the size of the side chain groups are two different secondary structures of the protein are possible. The first type of secondary structure of a protein is alpha helix structure. The alpha helix model was postulated by Linus Pauling in 1951. If the size of the side chain groups R is quite large, the intramolecular hydrogen bonds are formed between the oxygen atom of the carboxylic acid group of one alpha amino acid residue and the hydrogen atom of the amino group of the fourth alpha amino acid residue in the chain. Thus, the intramolecular hydrogen bonding causes the polypeptide chain to coil up into a spiral structure called right-handed alpha helix structure. Each turn of the helix has approximately 3.6 alpha amino acid residues and a 13-membered ring is formed
by intramolecular hydrogen bonding. The pitch or the distance between any two successive turns of the alpha helix of a polypeptide is equal to 54 picometer. Many fibrous proteins such as alpha keratin in hair, nail, wool, skin, beaks, claws, and myosin in muscles have alpha helix structure. Let us discuss the alpha helix structure of the protein. If the size of side chain group R is quite large, so there is intramolecular hydrogen bonding between the oxygen atom of the carboxylic acid group of one alpha amino acid residue with the hydrogen atom of amino group of the fourth amino acid residue in the chain. This causes the polypeptide chain to coil up into a spiral structure called right-handed alpha helix structure. Now, the distance or the pitch between any two successive turns is 54 picometer. Each turn of alpha helix has approximately 3.6 alpha amino acids and a 13-membered ring is formed by intramolecular hydrogen bonding. The second type of secondary structure of the protein is beta-pleated sheet structure of the proteins. This structure was also proposed by Linus Pauling in 1951. In this conformation, the polypeptide chains are stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonds. Two types of pleated sheets are possible, that is parallel and second is anti-parallel. Beta keratin, the protein present in nails, scales, claws and cells of reptiles, has parallel beta pleated sheet structure, while the silk protein fibrin has anti-parallel beta pleated sheet structure. The second type of secondary structure is beta pleated structure. There are two types of beta pleated structure. Number one, parallel beta pleated sheet structure. Number two, anti-parallel beta pleated sheet structure. So let us discuss the first type, that is parallel beta pleated sheet structure. So in the parallel conformation, the polypeptide chains run in the same direction. In other words, N-termini are aligned head to head. यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो आपके एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स के, these are on the same side. Further, in parallel beta pleated sheet structure, any two neighboring polypeptide chains are held together by the intermolecular hydrogen bonds. So each intermolecular hydrogen bond is formed between the oxygen atom of the carboxylic acid group of the alpha amino acid residue of one polypeptide chain and the hydrogen atom of the amino group of the alpha amino acid residue of the neighboring polypeptide chain. So in this way, these polypeptide chains are held together by the intermolecular hydrogen bonds. Beta keratin, the proteins present in nails, scales, claws and cells of reptiles, has parallel beta pleated sheet structure. The second type of beta pleated structure is anti-parallel beta pleated sheet structure. In the anti-parallel conformation, the polypeptide chains run alternately in the opposite directions. That is, N-termini are aligned head to tail, or we can say N-terminus of one polypeptide chain and the C-terminus of the another neighboring polypeptide chain are on the same side. That is,
the N-terminal alpha amino acid residue of one polypeptide chain and the C-terminal alpha amino acid residue of the another neighboring polypeptide chain are on the same side. Further, these polypeptide chains are held together by the formation of intermolecular hydrogen bonds. Each intermolecular hydrogen bond is formed between the oxygen atom of the carboxylic acid group of the alpha amino acid residue of one polypeptide chain and the hydrogen atom of the amino group of the alpha amino acid residue of the another neighboring polypeptide chain. In this way, these polypeptide chains are held together by the intermolecular hydrogen bonds. The example of this antiparallel beta pleated sheet structure is the silk protein fibroin, which has the antiparallel beta pleated sheet structure. The next topic is tertiary structure of proteins. The tertiary structure of proteins represents overall folding of the polypeptide chains, that is further folding of the secondary structure. It gives rise to two major molecular shapes, that is fibrous and globular. The main forces which stabilize the secondary and tertiary structures of proteins are hydrogen bonds, disulfide linkages, van der Waals, and electrostatic forces of attraction. The next topic is quaternary structure of proteins. Some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains referred to as subunits or protomeres. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. For example, hemoglobin is an aggregate of four polypeptide chains or subunits, two identical alpha chains and two identical beta chains. These four subunits lie at the vertices of a regular tetrahedron. Each polypeptide chain carries a hemigroup at its end. Thank you. धन्यवाद.